Hello and welcome, Dr. Gagi, to this podcast. I am so glad uh, that our common friend suggested that you could be on this podcast. Whatever few minutes we've been speaking before this podcast has already given me a clue that you are very passionate about whatever you speak. And I have been thinking, what is the first question I can ask, since I also do not get time to prepare and I do not prepare so that so it's a fair level ground. Both of us are unaware of what the conversation will be. While talking to you right now, you mentioned that you were very clear that you wanted to be a doctor. Uh, why? Uh, why is little difficult for me to answer because it had come when I was very young. Maybe I was 7 or 8, Okay. and it just happened very naturally that I wanted to. I was a very good student in all my life. So, मतलब रैंकर्स में थे, टीचर्स पढ़ाते थे तो मेरा ध्यान अच्छा लगता था. I was very happy as a student, learning new things, studying, and maybe science was one of my favorite subjects. So Okay. uh, technology never impressed me, and knowing about nature, how medicines work, how human body works, was always tempting part for me. So I would play games also like that. Ki I'm Oh. making some medicine. Okay, now this medicine is going to help someone. I would put my medicine her. मतलब कुछ भी वो पानी मिला के या वो टाइम पे साबुन का पानी मिला के मिट्टी मिला के ऐसे घोल के I would give it to Ah. my all. Now you will feel better, something like that. And I always wanted to have a वो टाइम पे बार्बी डॉल का डॉक्टर सेट मिलता था. I always wanted, Yes. and my parents had got me that for my birthday, and I was super happy using all those small instruments which so Yeah. it no one in my family was a doctor, and हम लोग का घर पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो गया तो डॉक्टर के पास जाना है. घर पे ही ठीक हो जाते थे वो टाइम पे. So I don't know from whom I got inspired. I think it was a liking of the subject, and liking of what naturally the things that are around us. So that Okay. made, yes. Uh, this leads me to an interesting question. Somewhere along our talk, you also mentioned you are a mother to a 8-year-old, if I'm not Yes. mistaken. Yes. So this is a very contemporary question. I have a daughter who is 15, and I have a nephew who's 25 plus something. Uh, One of the things that I find that this generation has that we did not have as much is exposure to a wide variety of possibilities as far as career options are concerned. Okay. Uh, at least in terms of knowledge, the fields may have been probably there, but we were unaware that we could be anything. Like at least when I grew up, there was doctor, engineer, C. Yes. More or Yes. less everybody was within that thing, and if somebody didn't know what they wanted, they went into commerce and they became accountants or some such, um, or admin or HR or something like that. But they were the commerce, and arts was looked down upon at that point of time. Science, of course, meant that you branched out into engineering or medical. So my question to you is, uh, as a mother and as somebody who was lucky enough to know when she was 7 or 8 what she wanted to do, how do you how do you perceive this phenomena where there is so much of information but kids are more confused than ever before what they want to do with their lives? How do you see this? So I'm very glad that you have asked me this question, and I have broadened my smile even more. Ah. Um, my 8-year son, he's been homeschooled, Okay. and he was going to a Montessori till 5 years of age, that is till senior KG, and from first standard now he's in third, and we are homeschooling him. Okay. So after like experiencing our life, that we have got into education, इतना study किया है, इतना hard work किया है,
But somewhere my husband is also a homeopath and he practices. So somewhere we felt that in this education line, these over I think 15 years or 20 years, it has become like very monotonous. Like Okay. बहुत कुछ है करने के लिए, जी. but till a certain age it is very strict, ये ही करना है. फिर हमको ऐसे लगता है कि आर यू एक्चुअली लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट. मतलब बच्चे हैं तो जितना उन्होंने एंजॉय करना चाहिए, और फिर उनके तरीके से जो स्टडी में इंटरेस्ट आना चाहिए, whatever subjects they are liking to do or they are not liking to do, they are not forced कि अगर नहीं पसंद है तो मत करो, ठीक है, maybe after some time you might start liking that Okay. subject, you might go into it. So all these reasons were there. And अगेन होम्योपैथी टॉक्स अबाउट इंडिविजुअलाइजेशन. मतलब अगर आपको मैं एक दवाई देती हूँ सर्दी के लिए, तो वही सेम दवाई किसी और को मैं डायरिया के लिए दे सकती हूँ, किसी को हेडेक के लिए दे सकती हूँ. सो इट चेंजेस बिकॉज वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसको क्या चीज हो रही है. सो वी डू नॉट क्योर द डिजीज बट वी क्योर द मैन इन डिजीज. तो वही चीज हमने यहाँ पे भी लगाई कि बच्चा है, उसके लाइकिंग्स अलग हैं, वो भले हमारे परिवार में है, उसके फिर भी अलग थॉट्स हैं, अलग लाइकिंग्स हैं. तो व्हाई टू हैव दैट मोनोटोनस वे ऑफ लर्निंग थिंग्स. गिव देम लॉट ऑफ एक्सपोजर, लेट देम चूज व्हाट दे वांट. इट मे वेरी. आज उसको म्यूजिक पसंद है, कल उसको क्रिकेट पसंद होगा. तुम्हारा मतलब वो डायमेंशन ही चेंज हो जाता है कि वो ये करेगा लाइफ में या ये करेगा लाइफ में. बट यू जस्ट हैव टू वेट पेशेंटली. पेशेंस इज व्हाट इज नीडेड. सो कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए. बिकॉज नाउ आई वुड से कि अगर मैं जितना अर्न करती हूँ, आज एक हेयर स्टाइलिस्ट भी उतना ही अर्न कर सकता है, एक मेकअप आर्टिस्ट भी उतना ही अर्न कर सकता है, अ फैशन डिजाइनर कैन इवन अर्न मोर. ओके, सो इट इज totally dependent on your liking and your skills that you develop. True. So we are sorted. We are still like waiting. He is a multitasker, has love for many things. So वो अपने आप चूज करेगा. मैंने चूज किया था बिकॉज आई हैड वन थिंग, बिकॉज साइंस पसंद है. अभी उसको बहुत सारी चीजें पसंद है, तो वी आर वेटिंग कि वो कुछ अपने लिए अच्छा ही करेगा. बराबर. Luckily, the same kind of talk when I have with my daughter. She's gone through proper schooling, and I am a very non-academic pressure. Like the only thing I have told her is, if you come first in school, you'll be thrashed. So ऐसा हुआ नहीं है, बट वो एक दो बार मेडल जीत के आई कुछ कुछ जब छोटी थी. एंड फर्स्ट टाइम हमने भी सब रिश्तेदारों को व्हाट्सएप किया, देखो ये मेडल जीत गई है और ये वो. सेकंड टाइम शी वन समथिंग, आई सेड वहां जाके लटका तो जहाँ पहला मेडल लटक रहा है, अब किसी काम का नहीं है. अब एवरीबडी नोज दैट यू आर गुड एट इट. तो जो हैप्पीनेस था वो हो गया, अब छोड़ो इसको. अभी भी ऐसा होता है कि मैं उनके पेपर लेने जाता हूँ स्कूल में, तो आई जस्ट लुक एट सम मिस्टेक्स के, अच्छा ये ऐसा ऐसा किया है क्या, अच्छा इसको तो ठीक से करना. मार्क्स तो कई बार याद भी नहीं होता कि उसमें क्या लेकर आए. और अब मुझे कल ही याद आया था, I had come and kept the bunch in one corner and I said, God knows where they went, because I have never looked at them again. So it is that unimportant to me. Yes, schooling is easier in the sense of, which will also be my next question to you. सोशल इंटरेक्शन में बच्चा थोड़ा अपने एज के बच्चों के साथ ज्यादा एक कंफर्टेबल रहता है, एम्बियंस मिलता है, एंजॉय करता है. the academics itself is not very important to me. Yes. Like you said, like I was an average student, but I think I've done well for myself. Also now these days I've been trying to show her the advantage of being, I'm a writer by profession. So the advantage of not having a 9 to 5 job necessarily, or having it and then having the idea to drop it out and become a consultant or some such, is that you get to live your life a lot more than most people who are perhaps making more money, of course, having better lifestyle and everything, but their times are fixed, and the amount of time and money and lifestyle they have needs to be sustained.
which we do not have a problem. We get to suddenly halfway during the week you decide you want to go and watch a movie, you can. In my case, I'm lucky enough to call it work also. Oh, मैं तो study कर रहा हूँ. So nobody can say कि क्या कर रहा है. But not only creative, what I have been trying to tell her is till you are 24, 25, make all the mistakes that you want, inclusive of whatever degrees you take. I myself am an engineer who quit engineering after 2 years and got into writing something else, and then got into advertising writing, then got into film writing, then got into, these days I also do event, whatever is possible under the whole gamut of writing. Yeah, but this is becoming a little more about me. So my question to you was, how do you see the impact of social interaction on your kid? Considering I like the positives that you mentioned, in my own way, or in a, I think every parent wants to do that for their children. Nobody is wrong in that sense. Everybody thinks they are doing the best. Even the people who are taking the common ways that students are brought up, tuitions and this and that. But how do you see the impact of your decision on your kid? And what does he have to say about or think about in terms of, because a lot of kids these days are talking about pressure, which I cannot understand. My daughter put it very well once. She said, आप नहीं बोलो तो प्रेशर नहीं है, ऐसा नहीं है. तो प्रेशर तो है, बट मुझे अच्छा लगता है कि एग्जाम के प्रेशर की वजह से पढ़ाई हो रही है, आई एम ओके विद इट. तो दैट वाज हर आउटलुक अबाउट समथिंग एल्स. So how do you see this? So my son is super happy being homeschooled, because he gets a lot of time to do what he wants to do. Okay, it was in the beginning. So now this is the third year that we are homeschooling him. And in the first year, somewhere, because I did not know much about the concept, or maybe I was not mentally prepared for it, and he is very intellectual. So I thought कि अगर उसको proper education नहीं मिला तो he might, I don't know, उसके intelligence का क्या फायदा फिर. I had this fear. So I would try, कि चल बेटा 2 घंटा दिन का पढ़ लेंगे. ओके, अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो कुछ भी करके उसको वी आर ट्राइंग, कि चलो पढ़ाई करो, साम दाम दंड भेद सब आ जाता फिर. So slowly I realized कि no, this is schooling again. This is not we are opting for. If अगर मैंने छोड़ दिया है कि मुझे एकेडमिकली बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, उसका नॉलेज गेन करने के लिए वी हैव ऑलरेडी डेवलप अ गुड रीडर इन हिम, वोरेशियस रीडर. अगर पढ़ना है ना तो ऐसा 3 घंटे 4 घंटे बैठ के कुछ भी पढ़ लेगा, वो उसको जो पसंद आएगा वो पढ़ लेगा. So then why am I worried? Why I'm forcing him that he doesn't like doing? Probably at this age, okay, maybe after a year or two, he gets some click somewhere and he gets inclined towards something, so he will pick up. क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है या वो some mental issues है, ऐसा कुछ भी नहीं है. He's a normal kid. True. So when we left forcing him, he started enjoying it more. He has learned playing keyboard by himself. मतलब उसके फादर कीबोर्ड घर पे ऐसे थोड़ा सा बजाते हैं हमेशा. So he had developed interest in playing that. So without forcing, every time he would get up without doing anything else, 1 घंटा लगा कीबोर्ड के साथ. तब हमको लगता है इसका क्या होगा, रूटीन कैसे करेगा, ये सही टाइम पे ब्रश नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता. But magically he adapted to that keyboard so well कि आप उसको गाना बोलिए, अगर उसने वो गाना सुना है सही से तो वो 2 मिनट में उसके कीज ढूंढ के आपको प्ले करके बजा देगा. I feel that is achievement for the human brain. कि आपके सामने कोई चीज पड़ी है, आप उसको अपने आप से किस तरह से समझते हो और किस तरह से उसका यूज कर पाओगे और अलग अलग पैटर्न में यूज कर पाओगे. ठीक है, तो वो आप जब दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो और इसमें आपका इंटरेस्ट बनता है, सो दैट इज द ट्रू लर्निंग.
So that this experience came in multiple things, not only in music. So now he's pursuing music जिसमें वो keyboard अभी professionally सीख रहा है, keyboard सीख रहा है, तबला सीख रहा है, vocal सीख रहा है. Then he's into sports. So his sports was so good that technically he is so sound because his father helped him in that. He trained him at some points. तो वो क्रिकेट अच्छे से खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, स्क्वॉश खेलता है, टेबल टेनिस खेलता है, चेस खेलता है, कैरम खेलता है. So he is 8 years and he is pursuing so many things by 8 years. He is learning Sanskrit. He is able to understand small paragraphs in Sanskrit. What he reads it, he understands what the paragraph is trying to tell. He can speak few words and small sentences in Sanskrit. He is learning Gita chanting. उनके गीता जी के 3 अध्याय हो गए ऑलमोस्ट. तो वो ये सब चीजें कर रहा है. फिर बिकॉज वी आर जैन्स ही गोज टू पाठशाला. तो काफी सारी जगह पे ही इज लर्निंग, he is interested in learning those things. He is interested in doing it in our Indian culture form. Okay, he gets his friends all at all these places. So social communication, teacher student relationship, friends, different age groups coming in contact, वो भी उसका हो जा रहा है. He is also learning dramatics. तो dramatics में भी इमोशनल डेवलपमेंट काफी हो जाता है. वहां पे भी उसके डिफरेंट एज ग्रुप के फ्रेंड्स हैं. सबसे बड़े जो हैं ही इज 17-18 years. वहां पे 3-4-5-6 लोग हैं जो वो एज ग्रुप के हैं. फिर दूसरा 10 के एज ग्रुप के भी हैं, 12 के एज ग्रुप के हैं, उसके एज ग्रुप के हैं, उससे छोटे भी हैं. सो ही हैज दिस स्पेक्ट्रम वेयर ही कैन इंटरेक्ट विद ऑल दिस एज ग्रुप. तो एक जो मिथ है कि अगर स्कूल से निकाल दिया फिर सोशलाइजिंग का क्या होगा, एंड ये तो है ही नहीं. तो ये तो मिथ है. आई कंसिडर इट एज मिथ. इट इज लाइक कि आप बच्चे को कितना फ्रीडम देते हो, कितना एक्सपोजर देते हो. देन कौन सा बच्चा ऐसा है, मैं आज पूछूंगी, हु इज इन 3rd grade और उसको दिन का 3 hours मिनिमम खेलने को मिलता है अनस्ट्रक्चर्ड फ्री प्ले, which is very important. True. Very. So दिल खोल के खेलता है, वो भागता है इधर उधर. मतलब क्या हो जाता है ना, he reaches playground at 5 o'clock. तो जो बच्चों की स्कूल जो सुबह की होती है, they are already playing by 5. तो वो 5 to 6:30 या 7 तक खेलते हैं. फिर घर जाके उनको खाना रहता है, होमवर्क रहता है. तो वो अगर 6:30 तक चले जाते हैं, then there is the second lot of students who are coming who has got afternoon school. So he plays even with them. तो उसका वो ऑलमोस्ट 5 to 8 या 5 to 9 समटाइम्स लेट भी हो जाता है. अगर 6:30 को गया है तो मैं उसको खाना खा के भेजती हूँ, तो 10 बजे तक खेलता है. सो ही गेट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस बस्ट. रियल प्ले, फ्री अनस्ट्रक्चर्ड प्ले, ना कोई रोक टोक, जिस तरह से मस्ती करनी है, उल्टा होना है, पुल्टा होना है, मंकी बाज करना है, स्लाइड करना है, स्विंग करना है, पकड़ा पकड़ी खेलना है, ऑल दिस, क्रिकेट खेलना है, बॉल कैचिंग खेलना है. सो ऑल दिस grooms your physical strength as well as mental strength, and you are absolutely stress free. So these are the beautiful points जो होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग के होते हैं, and he is very happy about it. Okay. Sorry, I'll throw a spanner in your works, ask a negative question here. Okay. I love what you talked about so far, because it also, as a parent, even I was thinking some of those questions. How planned can one be in life? Right now, it is very good that all these things are falling in place. Sooner or later, kids grow up. There are the typical 10th standard, 12th standard exams and graduations, and I understand where you're coming from. I also understand that he is lucky to have several interests that he is good at also. Because there are, when I was trying to dabble in the film line, trust me, in the Andheri to
Borivali sector, every lane will have 5 writers, 5 filmmakers, 5 directors, and it is a very, very difficult field. People do not succeed very easily. People may have talent or may not have talent. They're admitting to them their own self after having spent 6 years, 7 years, 10 years in the business that they are not good at it is a problem. And I'm not even bringing in the education aspect here. I'm just saying investment of time, effort being put in. As a person, again, you've been lucky that you knew very early. I also kind of just when I finished my college in the first 2 years, I knew I didn't want to do engineering at least. I didn't know what I wanted, but I knew what I didn't want. But it wasn't easy. Obviously, once you spend so much time, though, already that pressure was there. इतना पढ़ाई किया, फेल होके पास हो गया, अब क्या करेगा? My brother is an engineer, so it was already kind of decided, अरे तुम दोनों तो आगे जाके business करोगे, अच्छा हो जाएगा. But when I joined this business for hardly a couple of months, and I used to sit there, I used to have existential issues. Okay, this cannot be my life. I cannot sit here and deal with people and talk about wires and this and that. This is not me. Luckily, I found writing, and but then people like you and me are fairly blessed that we knew very early in our paths that these are times and efforts and spaces that we want to be in. So somehow we grew lucky, and thankfully we've done well for ourselves. Does this ever cross your mind? सब ज़्यादा ही ठीक चल रहा है. How to look at it? Is there a perspective of, as a parent, we all are at some point have some fears or doubts or stuff like that, and you've taken a brave decision already. मतलब 3 साल हो गए doesn't mean कि हर दिन सेम होता है. कोई दिन आता होगा जब लगा कि मैं पागल हो गई थी कि क्या कर डाला ये नॉर्मली सबके बच्चे जा रहे हैं, अरे मेरा भी बच्चा जाता, क्योंकि some days that kid may not be in his best element, best mood. उन दिनों पे when negative things happen to you, your husband, your family, your kid, how do you deal with it? What is your outlook of things in a bad time and space? I'm asking so that people who are being inspired by your fancy answer don't get stuck there and say कि सब अच्छा ही होता है. अच्छा तो कोई भी जिंदगी में 100% नहीं होता. Very true. तो जब खराब होता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? Okay, so I think what has helped me in my bad times is again going back to the same situation, trying to analyze myself. जी. मैंने जो किया, मैंने उसको डांट दिया है, या अगर उसने सही चीज नहीं की है तो मुझे गुस्सा आया है. See, one rule is very much in our family that we don't hit kids. कुछ भी हो जाए, you have to control your hands. At least वहां तक तो हमको पता था. So now we are going one step further and we are trying कि we have to analyze our own emotional state and work on that. वो बच्चा है, वो काफी सारी चीज कर लेता है तो वो बड़ा नहीं हो गया है, वो अभी भी बच्चा है. Okay, so this thing is first that you have to keep in mind. Second, अगर उसने नहीं किया है, and my son is actually like that. He is very determined. जो हम लोग बोलते हैं जिद्दी, I would not say that. I have learned this that आप उसको bad label ना देके पॉजिटिव लेबल नहीं, मतलब पॉजिटिवली बोलिए आप कि ही इज डिटर्मिनेंट, कि उसको जो करना होगा वो पूरी तरह से करेगा और बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेगा. तो ऑल डेज आर नॉट सेम. यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट. बट मुझे ऐसा लगता है कि होम स्कूलिंग में है ना, कैसा हो जाता है कि होम के जितने लोग हैं ना वो सारे स्कूल्ड हो जाते हैं. यू हैव टू अनलर्न योर ओल्ड आइडियाज एंड रीलर्न द न्यू आइडियाज. तो and it is very subjective, very individualistic कि क्या आपने चीज की है, वो आप कितना एनालाइज कर पाते हो, इमोशनली आप कितना ग्रो कर पाते हो, खुद को चेंज कर पाते हो. अगर कोई आपको स्ट्रेस देता है तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना लेते हो. अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपको प्रेशर फील होने ही नहीं वाला है. All days are not same. ठीक है, something sometimes my son is just ऐसे lying down and कुछ नहीं, ऐसे स्टोरीज कुक कर रहा है.
I'm like, why? ये इसके साथ मैं मतलब मैं ज्यादती तो नहीं कर रही हूँ, ये कुछ अच्छा बन सकता था, यू नो, सीआईडी वगैरह कुछ एकदम इतना इंटेलेक्चुअल है, वो पजल्स वगैरह सॉल्व करता है, एम आई रूइंग हिम हिज ब्रेन कैपेसिटीज? बराबर। एंड देन समटाइम्स ठीक है यार, उसका लेजर टाइम है, अगर वो सीआईडी नहीं बन सका, पुलिस नहीं बन सकता, क्रिमिनल डिटेक्टिव नहीं बन सका, या फॉरेंसिक मेडिकल इंजीनियर, ये साइंटिस्ट नहीं बन सका, या कुछ नहीं बन सका, तो स्टोरी राइटर बन जाएगा यार, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्ट लेके बहुत बच्चे पढ़ते हैं, बड़े पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे अभी आपने बताया आप ऑथर बन गए, सो ठीक है, ही कैन परस्यू दैट वे। मैं क्यों डर रही हूँ? अगर मैं वो चीज का प्रेशर लूंगी तो मैं उसके ऊपर बरस पड़ूंगी, मैं उसको डांट दूंगी, फटकार दूंगी, जो होता है अभी भी होता है, मैं आई विल नॉट से नो, बट जी। इट गिव्स यू it gives you the opportunity to grow, it gives you opportunity to grow yourself. बच्चे आते हैं लाइफ में just because you have come, Sadhguru says this, कि just because you have come few years early and you have got experience in your life, तो क्या आप देर शाने हो गए क्या? वो आएंगे, उनकी समझ ज्यादा है, ठीक है, तो आप उनको उनके तरीके से करने दीजिए, जब वो काम पूरा होगा ना, यू विल बी सरप्राइज कि ये आपका तरीका सोचने का नहीं था, एंड दे हैव डन इट ब्यूटिफुली, एंड आई ट्रू। हैव एक्सपीरियंस दिस, दे आर ब्यूटिफुल इन देयर वे। ट्रू। मतलब हम उसको जब मैथ्स भी कराते थे, तो हम लोग अगर सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं, तो मैं उसको पूछूंगी कि 5 - 2 कर देंगे, तो हम लोग कैसे गिनते हैं? 2 3 4 5, वी विल एड एंड वेट गो टिल दैट नंबर। तो वो भाई साहब उल्टा काउंट करते थे, अगर 5 में से ही वुड कट इट एंड कम उल्टा, जब तक उसको आंसर 2 नहीं आता। तो हम लोग को लगता था कि ये ऐसा कैसे कर रहा है, बट every time he came up with a correct answer. Then I was like, why I have to teach him my method? He's right ट्रू। on his method. Every time he did, and he was right, not for one day, for the months together. He was always correct. Then why then I have to put my method in his brain? ट्रू। So I taught him my method some way later, कि ये आप ऐसे भी कर सकते हो. So he was like, okay mama, I understood, but still he continues with his method. So it's a very different way, and I think कि आप उसमें एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने आप से समझ रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा एक ही एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें सीख लेते हो। तो वो सब सोच के मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, लेट हिम डू इट इन हिज वे, लेट हिम टेक टाइम, वो करेगा, अपने आप करेगा, वो सीख जाएगा। मैं भी तो ये सब किए ही होंगे, मेरी मम्मी मेरे को कभी कभी ये भी आ जाता है कि वो भी कंट्रोल, हाँ हाँ तुम तो बड़े अच्छे थे, तुमने जैसे ये सब किया है, तो आई एम लाइक ओके बस ठीक है, मैं समझ गई, लेट हिम बी। बराबर। तो एक कंट्रोल ऊपर से भी रहता है आपके। जी। बट आप बच्चों को काउंसल भी करती हैं, उसके बारे में कैन यू टॉक अ बिट, व्हाट डू यू रियली डू? So I'll tell you how it happened, because we started very early reading with my son. मतलब जब मुझे पता चला, actually early नहीं, I was late. अभी तो क्या बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में ही जितना आप पढ़ो, मतलब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लर्निंग हैबिट, कि आप रीडिंग हैबिट रखो, उसके लिए आप पढ़िए। तो जी। वो जब से आप स्टार्ट करते हैं, तो योर चिल्ड्रन इन द विद इन द वूम विल आल्सो ग्रेजुअली डेवलप दिस इंटरेस्ट ऑफ रीडिंग। तो ये मुझे पता चला व्हेन माय सन वाज ऑलमोस्ट 6 8 months ओल्ड, जब वो मतलब बैठने लगा था 8 months पे, एंड यू नो लॉटरिंग अराउंड, सो वी देन स्टार्टेड टेकिंग बुक्स फॉर हिम, and he would get interested in those pictures and would listen very quietly, very interestingly कि ये क्या बोलना चाह रहा है। एंड तब से हमारी ये जर्नी इसके साथ चालू हुई। तो मुझे लगा कि दिस इज सो ब्यूटीफुल, कि अगर इतना छोटा बच्चा अगर इतने अच्छे से सुन रहा है, क्या समझ रहा है आई डोंट नो, कितना सीख रहा है आई डोंट नो, लेकिन इट वुड कम आउट एज अ मिरेकल, कि कभी उसने बता दिया कि ये चीज में ऐसा होता है। वी आर वंडरिंग हाउ यू नो, लाइक मम्मा वी हैव रेड दिस इन अ बुक। आई सेड ओके वेरी गुड इफ यू रिमेम्बर। एंड तो वो समझता है कि वो कैसे सीख रहे हैं। या। So by the time he was 1 year, we had almost nearly 80 to 100 books for him.
by the time he was 1 year. So you can imagine कि 6 महीने में के 8 महीने में इतनी सारी कलेक्ट कर ली, क्योंकि उसको इंटरेस्ट था. वो सारी नहीं पढ़ी थी, लेकिन काफी सारी पढ़ ली थी उसने. वो मतलब मैं पढ़ती थी उसके लिए. तो नाउ व्हाट टू डू? तो वी थॉट कि लेट्स स्टार्ट अ लाइब्रेरी, सो दैट ये एज ग्रुप के जितने बच्चे हैं अपने एरिया में, जितने लोग हैं, इवन दे विल गेट अपॉर्चुनिटी एंड दे विल इट्स एन एक्सपेरिमेंट फॉर देम ऑल्सो. अगर उनको नहीं अच्छी लगी तो क्यों इतना इन्वेस्ट करना. हमारा तो इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ था, तो मेरे को लगा कि चलो किसी और को भी मदद हो जाएगी. तो इन आवर क्लिनिक सेटअप ओनली वी स्टार्टेड अ लाइब्रेरी for them, so that this interest goes on, and many kids also did that. तो उनको भी बहुत मजा आया पढ़ने में. तो पेरेंट्स वर ऑल्सो हैप्पी कि बच्चा शांत हो रहा है, वो अच्छे से बैठ रहा है, सीख रहा है. So I'm like, okay, very good. Then gradually, as my son grew, and because we were homeschooling, and I just told you in the previous question that we are not seeing outside world, but we are trying to see what's happening with us inside. तो हम लोग my interest started, when we started reading many more books for him. There are beautiful books which are written about strengthening yourself. You are a human being, resilience, empathy, compassionate, being kindful, being loving to others, being helpful to others. So story books is one category, and this self developing books जो होती है, that is another category. तो फिक्शन एक हो जाता है, फिर एक नॉन फिक्शन साइंस का पार्ट हो जाता है, फिर एक ये वाला सेल्फ डेवलपिंग पार्ट जो था. तो इसके बुक्स व्हेन आई रेड, तो आई गॉट मोटिवेटेड कि यार ये एज ग्रुप के लिए अगर ये ऑथर ने ऐसी बुक्स लिखी है, और ये जो कंटेंट है, काफी सारा कंटेंट, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे पता होना चाहिए. Why am I not behaving like this? This is very true. अगर मैं मेडिकल होके भी, मतलब डॉक्टर होके भी, अगर मेरे को ये कुछ चीजें मेरे में बदल कर सकती है, और ये एज ग्रुप के लिए लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये जो कंटेंट है वो सबको मिलना चाहिए, ये सबने पढ़ना चाहिए. And that is how I started with Mindful Saturdays with Gargi Auntie for kids. It's been just few months, but I in my program what I do is, first I start with one shloka which is in for the month. तो उसमें 4 sessions का एक ही श्लोक रहता है, so that they develop this Sanskrit language का liking, कि वो श्लोक का क्या मीनिंग है, क्या बताना चाह रहा है, वो एक चीज होती है. कोई भी प्रेयर हो जाती है या कोई भजन हो जाता है वो कैटेगरी में. सेकेंड पार्ट विच कम्स इज योग प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, या एक योगा पोस्चर हो गया, या योगा का कोई भी रिलेटेड डाइट टॉपिक है, या त्राटक जैसे कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, तो ये टॉपिक हो गए. फिर बुक रीडिंग सेक्शन आता है जिसमें आई पिक अप दिस टाइप ऑफ बुक related to the topic of the session. तो children have started identifying at their age group कि उनको कहाँ डिफिकल्टी आती है, और वो ये चीज कर रहे हैं, तो इसको अब कैसे करना चाहिए. अगर इस तरह से नहीं करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए. जैसे एक सेल्फ कंट्रोलिंग इमोशन का है, तो बच्चे का इमोशन है, उसको नहीं समझ रहा है, और बाहर से सिर्फ बिहेवियर दिख रहा है, और पेरेंट क्या करते हैं, तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो, तुम हमको उल्टा जवाब दे रहे हो, थप्पड़ लगा दिया, डांट फटकार, आपका वॉल की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, पनिशमेंट आ गया. अरे बच्चे को ही नहीं समझ में आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो आप उसको ऊपर से पनिश कर दोगे, तो व्हाट टाइप ऑफ इंडिविजुअल ही और शी इज गोइंग टू बी व्हेन दैट चाइल्ड ग्रोस अप. उसको जब समझ में आने लगेगा कि उसको अंदर से क्या हो रहा है, उसको कैसे हो रहा है, तो वो उसको बेटर कंट्रोल कर पाएगा, और वो बिहेवियर जो है वो छड़ी वाला बिहेवियर ना होके एक प्रॉपर इंटरनल ह्यूमन ब्रेन इमोशनल डेवलपमेंट वाला बिहेवियर है. सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रेसेस इतने हैं, पेरेंट्स हैं जो वर्किंग हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता उनको देने के लिए, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं,
तो मतलब how will they groom themselves? तो कहीं ये छोटी छोटी चीज अगर वो समझ पा रहे हैं या सीख पा रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं इस तरह से नहीं बट मैं इस तरह से करूंगा तो शायद it is going to help me, others, my emotions, my behavior, everything. Because these sessions are very age related. इट इज नॉट ऐसा पूरा साइकोलॉजी जैसा, मैं वैसे नहीं सिखाती। मैं मतलब उनको स्टोरी लेवल पे थोड़ा फ्री आर्ट करा दिया, फ्री योगा फन के लिए करा दिया, थोड़ा डांस करा दिया, तो यू नो इट इज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर देम। तो True. यही चीज आप पूरा वीक में करोगे तो यू विल फील रिलैक्स्ड। कोई भी स्ट्रेस आ रहा है, मम्मी ने डांट दिया, मुझे बहुत रोना आ गया, ओके आपने रो लिया, ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो, रिलैक्स हो जाओ, go and hug your mama, it's okay, it's your mom, okay? So you relieve that stress, ना ही कि वो पकड़ के रखेंगे कि गुस्सा आ रहा है, मैं मम्मी से बात नहीं करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं होमवर्क नहीं करूंगा, मैं चीजें तोड़ दूंगा। No, but we are relaxing and we are calming ourselves down and trying a better way to calm, which I True. think किड्स किड्स क्या बड़ों को भी जरूरत है। इसलिए मैंने जानबूझ के इसको ऑनलाइन रखा हुआ है कि अगर मैं सेशन भी ले रही हूँ बच्चे के लिए, तो अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बाजू में थोड़ा सा वो भी सुन ले तो उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए कि बराबर बराबर, everybody needs to calm down. या वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़े बदमाशी वाले सवाल पूछ रहा हूँ, तो आई कंटिन्यू दैट. So many good things about you. Where are your challenges for yourself? Where, how do you manage your bad days actually, where you are being unsuccessful in whatever you are attempting? These are, I do one little podcast and I know how difficult it is to manage, get guests, speak to them, be honest about this, be authentic about it, not prepare anything except the technicalities of it. तो ये तो बहुत छोटा है. I do other things as well, but everywhere else I have support of other people along with me. This is almost like a solo project that I have to do. Of course, I get help from a lot of quarters, whether it is technicality or suggestions or guests who are recommended by somebody else. How do you, with your parenting role, with your medical, I'm sure you're not even talking about your patients yet. So, if I were your patient, I would call you, but I know my homeopath gets called for everything right in the middle of consulting me or somebody because he has to pick up all calls. People get mentally settled once the doctor has answered their questions. So, besides, you have a husband who's a doctor, which is not making it any easier. Although, in a way, doctors getting married to each other solves 50% of their problems. You seem to be from a joint family. You have, what I was told by my friend is that you're also quite social and try to do things for the neighborhood. When you're bad, how bad are you, and how do you face those challenges? Because some days you want to say, I don't want to engage with anyone. There are just those days that you want your time for yourself. You don't want to be good to anyone. You don't even want to be rude to anyone, but you don't want to see anyone. You don't want to relate to it. And as a parent, I think those days come every 3 months where you're thinking कि यार बस हो गया, क्यों मैंने, why did I become a parent? ये कैसे solve होगा? तो ये तो बहुत normal चीज है, and of course over the period we understand कि ये normal है. How do you make your peace with your negative parts, and what are your negative parts? तो अभी ऐसा लग रहा है कि यार सब perfect है. हाँ. तो खराब है तो आप में क्या खराबियां हैं और कैसे डील करते हैं उससे? On a bad day, how would you deal with it? So I first I want to say very good questions, very thoughtful questions you're posting. नहीं, because it was too, you were going too perfectly. मैंने बोला अरे मेरी ऑडियंस देखेगी, बोलेगी अरे मैं तो ऐसा हुई नहीं, मैं तो ऐसी हुई नहीं, खत्म. तो I don't want that to happen. I think everybody is real. Yeah. जी. So yes, of course, I am human. So
as I told you, I've been learning homeschooling जब से 3 साल से I'm learning more. Okay, तो जितना मतलब I have been always a very good daughter, a very good student, a very good friend. मतलब सब में मैं बहुत अच्छी तो मेरे को लगा यार मैं तो एकदम ऐसा आई कैन रूल द वर्ल्ड, मैं तो इतनी अच्छी हूँ. बराबर. समटाइम्स यू है ना, यू गेट क्रैश्ड, और वो क्रैश जो होता है ना वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है. sooner or later you realize that कि sometimes it happens, you feel that people around you have suddenly not liking you, not appreciating your work. तो यू फील कि अरे तुम अभी तक तो इतने अच्छे थे और अभी अचानक क्या हो गया कि, तो मतलब लोग ही बुरे हैं ना, लोग तुमको नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि तुम इतने सालों से अच्छे हो, तो अचानक कैसे, तुम तो वही हो, फिर कैसे बुरे हो गए. जी. दैट इट हैपेंस, अप डाउन हो जाते हैं, तब गुस्सा रहता है कि दिस इज नॉट हैपनिंग इन माय वे. बट आई फील के माय सन हैज हेल्प मी अ लॉट. फर्स्ट, when I became a parent, what I learned was patience. Okay. Everything is not in your hands. You have to wait for the right time. It can happen, it can get resolved by itself. सबको ठोक बजा के सही करने की जरूरत नहीं होती है. सबसे झगड़ा करके उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है. या तो मेक इट और ब्रेक इट, ये ऐसा नहीं होता है. some things can stay as it is, or maybe after some time they can become better. Always think that it will become better. Third, ये जो एक फितूर था ना कि यू आर वेरी गुड, तो वो आपको समझ में आता है कि कल अगर आप दुनिया से चले गए ना, फिर भी दुनिया चलने वाली. ठीक है, तो आप बड़े खां हो ये मत समझो. Okay, Wonderful. and try to do as much good as possible. Why? Not to do, not to please people, but it is for your soul, feeding your soul. Okay, explain this. Because क्या happiness, like काफी बार ऐसा भी हुआ कि I wanted to take और buy things. पहले बहुत शौक थे कि ये ले ले, वो ले ले, ये खा ले, वो पहन ले, यहाँ जाए वहां जाए. बट एवरी टाइम व्हेन अगर मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, बिकॉज वी हैव वेरी मिनिमल चार्जेस, वी डू नॉट टेक सो मच चार्ज फ्रॉम द पेशेंट्स. और मैंने प्रैक्टिसिंग कम कर दिया था. ये जो आपने बीच में पूछा कि मेरा प्रैक्टिस में कैसे हैंडल करती हूँ, बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी आई हैड रिड्यूस्ड माय. उसके पहले मैं अच्छा प्रैक्टिस करती थी, बट आई हैड रिड्यूस मतलब बंद, ऑलमोस्ट बंद. बिकॉज क्या होता है इन होम्योपैथी, यू हैव टू लिसन टू दैट person's life Yeah. story, क्या क्या हुआ है, क्या एक्सपीरियंस हुआ है. So sometimes it is very good, sometimes it is not really listening, like ऐसा भी होता है. तो I didn't, और तभी मुझे पता था, मतलब my mom would say कि अच्छा रीड करो, अच्छा बोलो, अच्छा पढ़ो, तो बच्चे पे असर होता है. So I had stopped with that fear कि I don't want my child within the womb to hear, और उसको सब संसार की सारी बातें तभी पता चल जाए. ये वो टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन अगर मैं वो करती तो शायद कुछ और ही होता. वो he would have more humanly or whatever. तो मैंने तब से प्रैक्टिस बंद कर दिया था, कम कर दिया था. तो एंड फिर तो मतलब वो छोटा था करके एक आध दिन चले जाओ प्रैक्टिस के लिए, एक आध हाफ अ डे चले जाओ, ऐसा. दिस इज द वे आई ग्रेजुअली. फिर उसमें भी ऐसा होता है वो बीमार हो गया है, या उसका कुछ एक्टिविटी कराना है, या उसको कोई क्लास में लेके जाना है, तो फिर टाइम नहीं मिलता है. बिकॉज हस्बैंड डेफिनेटली, हम लोग जैसे घर का सिनेरियो रहते हैं, तो ही विल डेफिनेटली गो फॉर वर्क. नो डाउट ही हैज आल्सो गिवन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हिज टाइम टू आवर सन. But I would take up कि no, I will take in charge of his routine and everything. So उसमें मेरा practice काफी कम. So now when he was 7.5, I started at least coming thrice in a week. कि हाँ अब मैं half time ही, वो भी half time ही, but I will do, because to be a doctor was my passion. Was my passion.
तो वो मुझे करना ही है, मैंने बहुत मेहनत की है, तो मुझे वो बिकॉज आई वांटेड टू सर्व पीपल, सो वो मैं करूंगी ही. सो दैट वाज वन फीड टू माय सोल, one feed to my soul that my parents have worked hard और मुझे इतना educate किया. और अगर मैं घर पे बैठूंगी तो they also meant sometimes थोड़ा सा चालू कर दे, you will feel better, थोड़ा सा काम कर ले, you will feel better. क्योंकि क्या होता है ना, बच्चा 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 करके दिमाग में इतना ये हो जाता है और फिर आप बच्चे पे बरस पड़ते हो. तो वो यू नीड अ चेंज, यू नीड टू सी अदर वर्क. तो जब जॉइंट फैमिली में होते हो तो क्या होता है कि थोड़ी देर बच्चा, मम्मी ने देख लिया, चाची ने देख लिया, जेठानी ने देख लिया, ननद ने देख दिया, मतलब कोई ना कोई, तो वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता है. तो जब इट्स बीन फ्यू इयर्स दैट वी आर स्टेइंग लिटिल नियर बाय ओनली बट न्यूक्लियर, तो वो तुम पे फ्रस्ट्रेशन आने लगता है कि सब काम मुझे ही देखना है, घर का भी मुझे ही देखना है, बच्चे को भी मुझे ही देखना है, और ऊपर से होम स्कूल्ड है. तो to manage it mentally rather than doing it happily, I realized, and my husband also told me, that you are going in frustration. Don't do that. That is not how you are. You love to work. आपको एक सुकून मिलता है, एक हैप्पीनेस मिलती है, तो वो तुम मिस कर रहे. तो फॉर अभी भी हमारे घर पे वही चल रहा है कि फॉर सम टाइम he comes to clinic, sometimes I come to clinic. And when I am in the clinic, he is with my son. When he is in the clinic, I am with my son. So we are managing like that because अभी भी वो 8 है. Once he'll be 10, 11, तो फिर वो है काफी इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो थोड़ा सा अपना पेरेंटल ये कंसर्न I रहता think it is needed. है. It is To needed. Yes. तो वैसे उसको नहीं छोड़ रहे. तो because I've started working, I've liked it. Second point that I'm working with kids, और I've started गर्भ संस्कार center, तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि because what I have learned, जो मेरा जर्नी रहा है अब तक मेरे सन के साथ, that is a beautiful experience, that what life is about. तो why don't you also experience it? Why you cannot have a better feed for your child? मतलब आपका और बच्चे का रिलेशन इतना अच्छा हो जाएगा ना कि मतलब पेरेंटिंग बहुत इजी हो जाएगा. इट विल बी मोर ऑफ कामर एंड लविंग इन हार्मनी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको स्ट्रेसेस कम होंगे, बच्चे को स्ट्रेस कम होगा, यू बी लिविंग हैप्पीली. इसके लिए मुझे वो भी करना अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चों के लिए करना चाहिए. तो मैं सबको, मेरे ग्रुप जो है उनको थोड़ा इंस्पायर करती हूँ, चलो ये प्रोग्राम करते हैं पेरेंट और बच्चे के साथ, या बच्चों को ये एक्टिविटी करवा लेते हैं. कोविड, मतलब आई एम सॉरी टू से, कोविड वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी ऑफ अस, बट कोविड वॉज अ ब्यूटिफुल टाइम फॉर अस इन द फैमिली. okay. My father-in-law had a little difficulty of health issues, but that was only 15 days. But he came out really well out of it. But being together in the family, spending time, cooking together, eating together, playing games together after having early dinners, घर का सारा काम खुद करना है. So, when the child sees this, he gets a lot of warmth. He feels, yes, this is what is connection, what a family is about. So this experience of COVID with the family, then learning with him, reading different books, seeing my son so happy when he's playing around for unstructured play 3-4 hours. तो ये सब चीजें जब मुझे समझ में आ रही है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आई फील एवरीबडी इज कि सबको अच्छा लगना चाहिए. ये चीज आप करोगे तो आपको अच्छा लगेगा. तो इसलिए that is again a feed for my soul. So I like to work and that inspires me. That was a detailed answer, but thankfully because of that you could cover a lot many aspects of professional and personal life and how you found challenges and how you use them to learn. Firstly, some negatives came out automatically, which you also mentioned. Because this is very important in anybody's growth. Sometimes what happens is you come across like somebody who has all the answers. Nobody tells you or asks you about when did you not have the answers. How did you deal with the ignorance part of it? And I think it's an important aspect. Even this values workshop, sometimes when you are giving answers, and I'm like, oh, this is also a point of view.
One doesn't know everything about the world or how one looks at it. Yes. So wonderful. One last question that is coming to mind. How does your hubby look at this journey? How much of a part does he play in? Uh, because he's also managing the household. You said since you're nuclear, then finances and other things would obviously come into question. Uh, Living is an expensive thing, no matter what we say. Uh, how does he find time to contribute to the non-economic parts of life? Because when we are at work, we are obviously making money. So at least there is that advantage of, okay, I have put in hard work, effort, I am getting something out of it. Here, family times and specifically as challenging as your times are, since you are also working and your kid will need more attention, considering that the time that you can, I used to call it outsourcing to school. So outsourcing to tuitions, and because for a while they are doing the parenting for you and you are free, and you've obviously done the checking that these are the right places to send my kid to, so there is no fear of uh, them being harmed in some manner. So you are okay. Okay, these 2 hours are mine. How does your husband go about this? Because that is one voice we are not hearing here, and I would want you to tell us a little about how does he contribute to your value system. Are there any clashes that happen in terms of his outlook of things and your outlook, and how do you resolve it? Okay. Again, a good question, and I will. So it's not a very difficult journey for me with him because it was our love marriage, and we are from different castes. Matlab he is Marwari Jain and I was Gujarati Vaishnav. Not very different, but yes. Initial little family बोलते हैं ना Yeah, अंदर करना है ये वो सब था, but we were very strongly bonded with each other, and we knew that we are very sure that we are going to marry each other and we are not going against the families. मतलब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही रह लेंगे, अकेले रह लेंगे, but we are not going against the family. So he is a very family man. He's very supportive, and I have learned uh, letting go from him. I have learned samarpan, devotion from him. Um how to manage difficult times. He gives too much respect to females, okay, and he gives respect to what I love, what I should be doing. He's very motivating कि जब आप okay pregnancy के time पे आपको difficulty हो गई या उसके बाद you are taxed with so much of child's work, feeding and changing and everything. He has participated in everything except for feeding and giving birth. So changing changing thankfully. diapers, चेंजिंग डायपर्स, बच्चे की मालिश करना, उसके साथ खेलना, उसको बाहर लेके जाना, मतलब ही इज सच अ फैमिली मैन कि and it's a very simple way of living that he follows. मॉल्स वी डू नॉट प्रेफर, बहुत ऐसे धाम धूम करना, बहुत बड़े फंक्शंस करना, ग्लैमर, ये सब नहीं है. वेरी सिंपल क्लोथिंग, वेरी सिंपल फूड फॉर ईटिंग, वेरी सिंपल लाइफ. हम लोग के घर पे वी डू नॉट हैव हेल्प ऑल्सो, वी डू होम चोर्स बाय आवरसेल्व्स. हम लोग मैट्रेस नीचे लगा के जमीन पे सोते हैं, जमीन के बेड पे बैठ के खाना खाते हैं. वी वांट आवर सन टू लर्न ऑल दीज थिंग्स क्योंकि हमने बचपन में ये सब किया है, एंड विच इज सब चला जा रहा है, और ये वैल्यूज बहुत अच्छे हैं करके हम ये उनके साथ कर रहे हैं आजकल. मतलब ही सेज कि मैंने हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज में देखा है, बच्चे मेड को बोलते हैं मेरे लिए पानी लेके आओ, ये कर दो, वो कर दो. मतलब खुद के हाथ पैर नहीं हिलाना. तुम बड़े हो, रिच हो, तो तुम छोटों को किस तरह से भी बिहेव करो, ये सब ही नेवर वांटेड आवर सन टू लर्न और इवन सी. तो इसलिए हमारे घर में वो भी खाना बनाते हैं,
वो बर्तन भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, वो भी करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, हम भी धोते, मतलब सुखाना, मशीन तो है लेकिन सुखाने का काम वो कर देते हैं, मैं कर देती हूँ। वर्कआउट रेगुलर होता है, मैं सुबह वर्कआउट के लिए जाती हूँ, वो वर्कआउट के लिए भी जाते हैं, और मतलब टाइम थोड़ा डिफरेंट है। सो वी आर ट्राइंग टू डू as we would live in the ancient days of our life. We are trying to get back same values again in our this रेस्टोरेंट, मतलब वंस इन अ मंथ या किसी के साथ खाना हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं, मतलब कि वीकेंड्स है तो हम बाहर ही जाएंगे, बाहर ही खाना खाएंगे। और होम स्कूलिंग है तो हम तो वीकडेज में भी कभी भी ऐसे टाइम निकाल के थोड़ा घूम के आना है तो घर से खाना लेके जाओ, पिकनिक का मूड रखो, तो ही विल हेल्प विद एवरीथिंग, प्री प्रिपरेशंस करने में। तो he is a very big support to me. True. And he loves spending time with his son. तो वो दोनों की एक टीम हो जाती है, कभी कभी मैं अलग हो जाती हूँ, ऐसा होता है। So he loves playing with him and spending time with him. This has been a wonderful chat. You covered a lot, many aspects. I'm still wondering what do I call it the other side of. You will know soon enough by the time I've decided. Uh, a lot of it has been about parenting, although it was not planned. Some of it has been about counseling, some of it has been about your medical outlook of things. Let us see what comes up when I'm posting this episode. Thank you for giving your time and sharing your thoughts. It's been lovely speaking to you. Thank you so much. I would like to comment one thing, that Please. being a homeopath, I sit on this side and I have been always posing such questions to my patients. And today I'm feeling so glad that there is someone who is asking me such questions, and I was very happy to answer them. Yeah, thank you so much. I am sure it will give a lot of peace and happiness to a lot of people out there who are struggling with some basic issues at times. And I'm glad you enjoyed this chat. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yeah. Bye. Bye. Bye.